जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं तो उन्हें पता है कि जी मेरा नाम मुदस्सिर मंजूर है और मेरी क्वालिफ़िकेशन एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। मैंने दो तरह की सीरीज़ शुरू कर रखी हैं। एक तो लेक्चर सीरीज़ है जो अभी मैंने 9th क्लास की शुरू की है, फिर उसके साथ ही मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और 10th क्लास की, फिर ओ लेवल्स, ए लेवल्स के जो है लेक्चर्स भी स्टार्ट करूँगा। उसके साथ ही मैंने एक लेक्चर सीरीज़ शुरू की है गेस्ट पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए जो टू द पॉइंट स्टडी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो थोड़े वक्त में ज़्यादा नंबर हासिल करें। तो ये भी एक उसी लेक्चर सीरीज़ वो गेस्ट पेपर सीरीज़ का एक जो है हिस्सा है। आज मैं जो है 9th क्लास के फ़िज़िक्स के पेपर की जो गेस्ट है आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अगर आप ने थारोली इसको कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। मेरी वीडियो से बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जी एक तो कागज़ कापी अपने पास रखें, पेंसिल कापी अपने पास रखें। जो मैं बताता जाऊँ तो उसको नोट डाउन करते जाएं। और वीडियो से बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को रिकमेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्तेफादा हासिल हो। तो स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं गेस्ट की तरफ। सबसे मैं बेसिकली आपको दूंगा चैप्टर वाइज गेस्ट दूंगा। चैप्टर यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिफाइन ड्राइव क्वांटिटीज़ एंड गिव एन एग्जांपल। जो क्वांटिटीज़ डेफिनेशंस हैं उनको डिफाइन करना है, उनको ड्राइव करना है। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नोटेशन, उसमें नोटेशन में जो है आपके डिफरेंट किस्म के भी आ सकते हैं। चंद एक जो मुश्किल किस्म के हैं जैसे 0.0058 किलोमीटर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखते हैं। 100.8 सेकेंड्स हैं, उनको कैसे लिखते हैं। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफाइन द टर्म मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Right, two advantages of physics in our daily life. Differentiate between atomic and plasma physics. Why a screw gauge measures more accurately than a vernier caliper. Differentiate between the mechanical stopwatch and digital stopwatch. Define geographic. What is the least count of meter rod. Define scientific notation and give one example. Define the prefix and give one example. Why screw gauge measure more accurately than vernier caliper. ये मेरे ख्याल में रिपीट हो गया शायद। Write two rules to find significant digits in a measurement. Difference between positive zero error and negative zero error. What is the difference between base quantities and derived quantities. What is meant by scientific व्हाट इज़ मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन। जो कि पहले ये था कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन इसकी मालूम करें, और अब इसका जो है वो डेफिनेशन है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड द फिजिकल बैलेंस। डिफाइन बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। डिफाइन फिजिक्स। एस्टिमेट योर 14-year एज इन अ सेकेंड। व्हाट इज़ मीन बाय ज़ीरो एरर एंड द एरर करेक्शन। अच्छा, अगर हम यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें मैं आपको बताऊं वो मैं आपको नोट डाउन करवाने लगा हूं तो नोट कीजिएगा। योर हेयर ग्रोथ एट रेट ऑफ some mm per day. Find their growth in nano milliseconds. What is meant by stopwatch. Describe about digital stopwatch. What is the function of screw gauge, how it is used. A screw has 50 divisions. On its circular scale, the pitch of this screw gauge is 0.5. Find its least count. Write the rules which are helpful in identifying significant figures. अब हम ये वो थे जो यूनिट 1 के लिए आए थे। अब मैं आपके जो नोट डाउन करवाने लगा हूँ वो यूनिट 2 के हवाले से हैं। यूनिट 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड लीनियर मोशन, define velocity and uniform velocity, define speed and uniform speed, define acceleration and its equation, define displacement with the help of graph, define speed and its unit,
What is meant by positive and negative acceleration? Convert 20 meter per second velocity in kilometer per hour. Define uniform acceleration. A car starts from rest, its velocity become 20 meter per second in 8 seconds. Find its acceleration. Differentiate between rotary and random motion. Drive first equation of motion, write down formula and unit to find acceleration. Find the acceleration that is produced by 20 Newton force in a mass of 8 kg. इसके बाद जनाब है द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड रैंडम मोशन. उसके बाद जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट टाइप्स ऑफ मोशन है. उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट स्पीड, डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. लॉन्ग क्वेश्चन में जहाँ तक बात है इसमें आठ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. यूनिट 2 के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें ड्राइव सेकंड कंडीशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ है. ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ है. ए क्रिकेट बॉल hit vertically upward and returns to ground 6 seconds late. Calculate its velocity है. A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour when it has moved 100 meter. Drive third equation of motion with the help of graph. Prove with the help of graph Vf is equal to Vi plus At. Prove third equation of motion with the help of speed time graph. A car starts from rest, its velocity becomes 20 meter per second in 8 seconds. Find acceleration है. अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ. इसमें सबसे पहले हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. शॉर्ट क्वेश्चन में जो सबसे पहले हैं वो डिफाइन मोमेंटम एंड राइट इट्स यूनिट्स, राइट टू डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. Why rolling friction is less than sliding friction. Difference between force and inertia. Define Newton's second law of motion. Define centripetal force and circular motion. Why first law of motion is called law of inertia. What do you know about the Atwood machine? Define centripetal force and write down its equation. State law of conservation of momentum. When gun is fired, it recoils. Write down two method of reduce friction. Define force and write its unit. Write two difference between mass weights. Why two example of law of conservation of momentum. Give two example of law of conservation of momentum. How seat belts are useful in two ways at the time of driving. What is meant by banking of roads? Banking of roads. Why are spanner of washing machine is moved fastly? Write down two method of reduction friction. State principle of moments. Define inertia. जहाँ तक इसके लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल है तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नोट डाउन करवाता चलूँ. डिफाइन फ्रिक्शन एंड राइट डाउन 3 मेथड्स टू मिनिमाइज इट. प्रूव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन. What is meant by friction? Why rolling friction is less than sliding friction? Define the rate of change of momentum and also drive its equation. How much centripetal force is needed to make a body of mass 0.5 kg to move its circle of radius 50 centimeter with the speed of 3 meter per second. Right, 4 difference between mass and weight. State Newton first law of motion and explain with example. ये वो शॉर्ट क्वेश्चन लॉ क्वेश्चन थे जो यूनिट 3 के हवाले से बड़े अहम थे. अब अगर मैं बात करूँ यूनिट 4 के हवाले से तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको नोट डाउन करवाने लगा हूँ, तो प्लीज़ नोट कीजिएगा. डिफाइंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, आल्सो डिफाइंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. डिफाइन लाइक parallel forces and unlike parallel forces. Define torque and write its unit also.
define a rigid body, define center of mass, differentiate between torque and couple, explain the second condition of equilibrium, how head to tail rule helps to find the resultant of force, why a body cannot be in equilibrium due to the single force acting on it, what is a rigid body, differentiate between axis of rotation and momentum arm, define center of gravity, write two methods of reduction friction, what is head to tail rule, explain with example, differentiate between center of mass and center of gravity, define second condition of equilibrium and write its mathematical form. How vector are added by head to tail rule. If 8 Newton force making an angle of 45 degree with x-axis, represent it graphically. Write down two methods of reduced friction, state principle of moments, what is meant by plumb line, difference between torque and couple, what is the second condition of equilibrium, differentiate between like and unlike parallel forces, define parallel forces, write the name of its type, define moment arm of a force, describe the line of action of a force. ये वो शॉर्ट क्वेश्चन से जो कि एक्सरसाइज 4 यानी यूनिट 4 के हवाले से बड़े आम थे। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। फाइंड दी perpendicular moment of a force of 50 Newton making an angle of 30 degree with the x-axis. What is meant by resolution of force, resolve of force into its component. Nus has been tightening by a force of 20 Newton using 10 centimeter long spanner. What length of a spanner is required to lose the same nut with 150 Newton force? A force of 100 Newton is applied perpendicular on the spanner of a distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque produced by the force. Define the center of gravity of gravity. Find the center of gravity of an irregular shape with the help of experiment. How can a force F can be resolved into its perpendicular components Fox and Phi. अच्छा, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन थे जो कि यूनिट 4 के हवाले से बड़े आम थे। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। इसमें सबसे पहले हम सिमिलरली जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ तक यूनिट 5 का ताल्लुक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं डिफाइन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज़ ग्लोबल पोजिशनिंग system, write its importance, write two uses of artificial satellite, why does the value of g vary from place to place, state Newton law of gravitation, on what factor the orbital speed of satellite depends, why communication satellite are stationed at geostationary orbits, state the law of gravitation, explain how the value of g varies with the altitude, what is satellite and geostationary satellite, does define force of gravity, why does the value of g vary from place to place, what are artificial satellites, how the value of g varies from with the altitude, what is meant center of mass, define field force. ये वो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि यूनिट 5 के हवाले से बड़े अहम थे। अभी हम बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल एंड ड्राइविट्स इक्वेशन, डिटरमिन द mass of earth using Newton law of gravitation. By law of gravitation, find the mass of earth. A polar satellite is launched at 850 km above earth. What its orbit speed? Define gravitation, determine the
मास ऑफ अर्थ यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये वो थे जो कि यूनिट 5 के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस थे। अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं अब यूनिट 6 की तरफ। सिमिलरली हम यूनिट 6 में जिस तरह हम पहले देखते आ रहे हैं, यूनिट 5 के हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे, अब बाद में लॉन्ग क्वेश्चन देखे, इसी तरह हम यूनिट 6 की तरफ बढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की जहाँ तक बात है तो हम उसमें देखते हैं कि राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल fuel, write the name of the part of the solar heating system, write a brief note on Einstein mass energy equation, write two renewable energy source, explain one of them, write importance of wind energy, define energy and its different types. A machine does 20 joule work in 4 seconds. Find its power, how energy is converted to from one form to another form, define unit of power, write down the names of 4 types of energy, define potential energy and write equation, does the use of light energy, describe the use of light energy, what is meant by efficiency, define power and write its unit, differentiate kinetic and potential energy, define Einstein mass energy equation, what is meant by solar cell। आगे ये कंटिन्यूएशन है शॉर्ट क्वेश्चन की ही यूनिट 6 के। व्हाट इज़ द ग्लोबल पोजीशनिंग, डिफाइन मैग्मा, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई, राइट टू सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाट इज़ व्हाट, डिफाइन इट, राइट टाइप ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 6 के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और मैं आपको नोट डाउन करवाऊँगा लॉन्ग क्वेश्चन। Why fossil fuels are called non-renewable form of energy? A cyclist does 12 joule of useful work while pedaling his bike from every 100 joule food energy which he takes. What is his efficiency? Define kinetic energy and write its mathematical form. How energy is produced from nuclear fuels? Explain. Write two part of solar heating system. A machine does work 4 joule of work in 2 seconds. Find its power. Calculate the power of a pump which can lift 70 kg of water through the vertical height of 16 meters of 10 seconds. Also find the power of pump. Convert this power into horsepower. A stone of mass 50 grams strikes the ground with a velocity of 20 meter per second. How much is the kinetic energy of the stone at the time of its strike the ground? आखिरी जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर और थ्रू ए हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे जो कि यूनिट 6 के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट थे। अभी हम बढ़ने लगे हैं यूनिट 7 की तरफ। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन डेंसिटी एंड इट्स राइट इट्स यूनिट, व्हाट इज मीन्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफाइन पास्कल्स लॉ, डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स यूनिट, डिफाइन हुक्स लॉ, describe the principle of flotation, difference between stress and strain, what is meant by plasma, how does heating affect the motion of molecules of a gas, define the term heat and temperature। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे तो डिफाइन यंग मॉडुलस ड्राइव मैथमेटिकल इक्वेशन है, डिफाइन pressure, also explain the pressure in a liquid increase with increase in depth, explain the Archimedes principle, Archimedes जिसे भी कहा जाता है, state Hooke's law, also explain Young's modulus in detail, 40 meter long and 80 meter breadth, whose side are vertical, float partially loaded in water if 1 to 5,000 Newton of cargo added, how much water will it sink? अच्छा, इसके बाद जो है यूनिट 8 है। यूनिट 8 में हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आम हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आम हैं।
define latent heat of fusion, define internal energy of a body, define temperature of and heat, define evaporation, what is meant by internal energy, define specific heat capacity, how upper and lower points are fixed on the thermometer, define the coefficient of linear thermal expansion, describe the use of bimetal strip, define specific heat state, the kinetic molecular model and matter, define स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन एंड आल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन, explain latent heat of fusion and latent heat of vaporization and write its formula, how much heat is required to increase the temperature of 0.5 gram of water from 100 degree centigrade to 650 degree centigrade, convert 50 degree centigrade on Celsius scale into Fahrenheit temperature scale, convert 30 Kelvin on Kelvin scale into Celsius scale। ये वो थे जो कि हमने देखे कि यूनिट 8 तक बड़े अहम जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 9 की तरफ। हम इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन रेडिएशन, राइट 2 वेज बाय विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस, व्हाई आर द मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, define conduction, define the rate of flow of heat and write its mathematical formula, define greenhouse effect, define rate of flow of heat, what is meant by convection currents, what is meant by conduction, define thermal conductivity, write name of 2 expert thermal riders। जी स्टूडेंट्स, ये गेस्ट पेपर था जो कि 9th के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने बड़ा थारोली इस पे पिछले 5 साल पेपर को मद्देनज़र रखते हुए और जो पिछले 5 सालों में इग्नोर कर दिए गए थे इंपॉर्टेंट सवाल, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव सा एक गेस्ट पेपर बनाया है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से कर लेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर हासिल करेंगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों को रिकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच।